हम लोग जुड़ गए हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या हाल है? हिंदुस्तान में तूफान निकल गया? जी काफी कंट्रोल किया ना गुजरात में? जी 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 एनडीआरएफ ने और एसडीआरएफ ने सबने बिल्कुल मिलकर। बिल्कुल सर। यही बंगाल में होता तो बड़ा भयानक स्थिति होती वहाँ। हम्म। वो लोग तो क्रिएट करते हैं ना, जिससे कि और थोड़ा सा बदनाम हो, सेंटर ज्यादा नहीं, बदनाम। पैसे भी मिले, फिर पैसे वैसे भी मिले। वही ना। और सर बताएं। लॉ कमीशन का नोटिस पढ़ा? हाँ सर, वो आपका वो मैं पढ़ रहा था, मैं कमेंट भी किया हूँ। हम्म। अभी देखो, मुझे लगता है कि ये मानसून सेशन में नहीं तो विंटर सेशन में आ जाएगा इसी पक्का। जी 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 जी। और 2016 आना से भी चाहिए। बैक बर्नर में रखा हुआ था इन लोगों ने। जी जी, देखते हैं आना भी चाहिए, इट्स अबाउट टाइम। आना भी चाहिए। कि रिएक्शन बड़ी अजीब सी है ना। जी जी। कल एक न्यूज और मैं देख रहा था, कौन सी न्यूज थी उसके बारे में। हाँ, ये क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अल जजीरा का एक कोई उन्होंने वो बनाया है, डॉक्यूमेंट्री बनाई है। नहीं नहीं, उसको तो रोक लगा दिया गया है ना। हाँ, तो क्या है, हु रिमूव द फ्यूज समथिंग लाइक दैट करके है ना, कुछ ऐसा करके वो हाँ, वो वाला। जुडिशरी इज नाउ एटलीस्ट इन लाइन। एक्टिव एक्टिव। हाँ। बीच में तो पूरा स्लीपिंग मोड में चला गया था। शुरू कर दें? चलो। जी सर, जी सर। हमारे तरफ के लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं यार, एकदम ये नई जनरेशन। ये आदि पुरुष का कमेंट आ रहा है, रिव्यू आ रहा है। आदि पुरुष को कितना मतलब घटिया बनाया है इन लोगों ने, इतना पैसा खर्चा करके। क्यों बनाते हैं सब? मुझे लगता है कि ये इतना पैसा इनके पास में आया, या आया कहाँ से, उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अभी कोई 6 महीना पहले जब इन लोगों ने टीजर इशू किया था, उस समय जी काफी जी। बवाल हुआ था, तो इन्होंने बोला ठीक है हम उसको चेंज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब उसमें बोलते हैं कि उस समय 250 में बनी थी, अब 500 करोड़ में बनी, तो 250 करोड़ कहाँ से आया तुम्हारे पास? इसके बारे में भी कुछ होना चाहिए। और पहली बात तो यह है कि वाई दिस टाइप ऑफ फिल्म्स आर बीइंग गिवन सेंसरशिप सर्टिफिकेट, जहां पर कि वो राम का नाम ही बदल रहा है, राघव बदल रहा है, हाँ 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 हाँ। सीता का नाम जानकी कर रहा है, और वो हनुमान जी पिट रहे हैं वहां पर, मैं लंका तो को काला देखा नहीं दिखा है, रहे हैं। लेकिन रिव्यू में पढ़ रहा था, तो आप सही बोले हैं, डिस्टॉर्शन इतना ज़्यादा है कि जो हम्म, लोग नहीं जानते हैं, मतलब बाहर के लोग मान लीजिए, जो नहीं हम्म। जानते हैं एकदम, वो देखेंगे तो उनका तो एक बड़ा दूसरा मतलब डिस्टॉर्टेड पिक्चर जो पेश किया जा रहा है, वही उनके दिमाग में बैठा रहेगा। लोग बर्दाश्त भी कैसे कर रहे हैं इसको, मतलब क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ भी करें हम। ये इतना मुझे लगता फ्रीडम है है एक हमारा। डिजाइन है, वो डिजाइन ये है कि अगले साल राम मंदिर 22 जनवरी को शायद हाँ हाँ खुल हाँ। जाएगा ना, तो उसके पहले ये राम की जो कैरेक्टर है ना, उसको पूरा का पूरा उसको वो कर। असैसिनेट करें, हाँ, असैसिनेट करें पूरा। हाँ, कि अरे तुम तो एक ऐसे आदमी को कर रहे हो जो ऐसा था वैसा था। अभी वो जंगल में वहां पर लव स्टोरी दिखा रहा है, क्या मतलब है ये? अजीब जबकि तमाशा। रामायण में ऐसा कुछ है ही नहीं। नहीं, नहीं है। वो नेपाल में तो उन्होंने बोला कि इस फिल्म को हम चलने नहीं देंगे। तो सही तो बोला है, यहाँ भी वो वही होना चाहिए ना, हमारे यहाँ अनुराग भी यही ठाकुर को होना उठा चाहिए। करके फेंक देना चाहिए, मैं तो ये बोल रहा हूँ। अनुराग ठाकुर इज यूजलेस करेक्टर नाउ। एनीवे, अपने टॉपिक पे आते हैं। जी हम सर। लोग आज 23-24 आर्टिकल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जी ये सर। है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। उसमें चाइल्ड करेक्ट। लेबर है, और बॉन्डल लेबर है, बेगर्स के बारे में है, जी और जी। वो जो काइट फ्लाइंग होता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ये सब कुछ उसके बारे में चलता है। ये जी जी आर्टिकल्स जी। डील कर रहे हैं। दो दे आर नॉट दैट मच in the news, but they are बट important स्टिल for the वेरी public. इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पब्लिक। They should know.
कि ये क्या है, क्या नहीं है। तो मैं एक लीगल सर्विस इंडिया का एक आर्टिकल है, थोड़ा अच्छा आर्टिकल मुझे लगा था, मैं इसको जी, जी, जी। शेयर करता हूँ, आप पढ़ के सुना दीजिए पब्लिक को। जी, जी। और उसके माय बाद में अगर प्लेज़र सर। टाइम रहेगा तो हम दूसरा भी शेयर करेंगे। लेकिन हुँ, दीज टू आर्टिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच आर नॉट नोन टू द पब्लिक एट ऑल। करेक्ट सर। जी, आ गई। तो पढ़ता हूँ सर। हम्म। Rights against exploitation, Articles 23 to 24 under the Indian Constitution. Now it says that, ये कहाँ से पढ़ूँ? इंट्रोडक्शन से। राइट हम्म। अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आर्टिकल 23 होगा। हाँ, हम्म। पता नहीं कैसे लिखते हैं लोग। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। नंबर वन, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगर। बेगर मतलब ये बिना पैसे का जो मजदूरी करवा रहा है कोई जबरदस्ती, वो चीज़ है। एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड, and any contravention of this provision shall be an offense punishable under law. Number two, nothing in this article shall prevent the state from imposing compulsory service for public purposes, and in imposing such service, the state shall not make any discrimination on grounds only of religion, race, caste, or class, or any of them. कुछ बोलेंगे सर आप इस विषय में? नहीं। नहीं नहीं, इसमें एक चीज है। आप एक बात देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन लिखा हुआ है, रेस लिखा हुआ है, कास्ट लिखा हुआ है, क्लास लिखा हुआ है, जी, और एनी ऑफ देम, मतलब चारों में से कोई भी एक। जी। जबकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कलर भी आता है। अच्छा, अच्छा। तो बाकी तो ठीक है, कोई वही नहीं है, मतलब जी, गवर्नमेंट जी, जो है जी। डिस्ट्रिक्ट वो कर सकती है कि भाई जी, जी। हाँ, हाँ, हाँ। उनके पास तो पूरा राइट है ही ना, कुछ भी कर सकते हैं। जी, जी। There are two declarations are included in this article. First, it prohibits the trafficking of human beings, beggars. Not beggars मतलब वही जो मैं बोल रहा था, मतलब हम्म। जो जबरदस्ती काम जिन लोगों को करवाते हैं, and हम्म। other similar types of forced labor. And secondly, that any infringement of the prohibition is punishable by law. Human trafficking involves dealing, like selling, allowing, or like goods, disposing of like goods, men and women. Trafficking for unethical and other uses would include women and children. To punish actions which result in the trafficking of men, the Immoral Trafficking of Women and Girls Act of 1956 is a law adopted by the Parliament according to Article 35 of the Constitution. The term trafficking of human beings is not directly stated, but it is indisputably used. Whoever imports, exports, removes, buys, sells, or disposes of any person like a slave, or detains him or her against his or her will as a slave, is punishable with imprisonment under the existing laws. By law, bonded labor has also been made illegal. Now, coming to Article 23, Clause 1, the term used as other similar forms of forced labor has been interpreted in the Calcutta High Court by the Calcutta High Court in Dulal Samanta District versus District Magistrate होगा. Here the term as ejusdem generis, the term as ejusdem generis, as it has been used either like traffic in human beings or beggar, matlab forced labor. The mandatory service is not prohibited for public purposes under Article 23, Clause 1, and the state does not discriminate with respect of religion, race, caste, or any of these services as it imposes those services. However, Article 23 Clause 2 does not prohibit discrimination on its grounds, and the state may exempt women from compulsory service. Coming to the background, when the Constitution was adopted, there was hardly any place of forced labor or slavery in any part of India. Since the 20s,
of क्या 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 Bolta, when the constitution was adopted, there was hardly any practice of forced labor or slavery in any part of India, which is not correct. कुछ भी बोल रहा है ये। हाँ, आगे पढ़ो, छोड़ो। हाँ, Huh. however, हाँ, ये We पुराने टाइम disagree with this. Since the however, untouchables were being exploited in several ways by the higher or richer classes in many parts of the country. For instance, in parts of Rajasthan and Western India, which was a cluster of princely states at the time of independence, there was a tradition in which workers who worked for a certain landowner did not leave it to seek employment anywhere without their permission. This is all right. Evil spirits. Evil spirits. क्या इतना अंग्रेजी, like the Devdasi system. Evil spirits, no, evil practices like the Devdasi system under which women were devoted to Hindu deities in the name of worship. In some regions of southern and eastern India, objects, temples, and other religious structures, and under which they were the victims of desire and immorality, rather than leading a life of devotion, self renewal, and compassion, were prevalent during those times. मैं अंग्रेजी ठीक कर देता हूँ अपने हिसाब से सर. With the advent of independence, the Constitution was eager to proclaim a war against the people who indulged in such practices, as these practices have no place in the new social and political era of the times. Since 1982, Articles 23 and 24 have become such a potent instrument in the hands of the court to ameliorate the pitiable condition of the poor in the country. Article 23, Clause 1 states that prohibition of trafficking in human beings, beggar, and other similar forms of forced labor, and any breach of this provision is punishable under law. बहुत खराब अंग्रेजी है सर इसमें. This article not only protects an individual against the state but also against private citizens. This article included 3 unsocial practices, that is, beggar, traffic in human beings, and forced labor. Beggar. It's not beggar, but beggar. It means involuntary work without payment. This term is used where a person is compelled to work against his will. A person is also not paid any remuneration for that work. It means a person who is in power who exercises power without giving remuneration for it to a person for a service extracted by the government. क्यों लिख रहा है ये भी तो गलत लिख रहा है. Therefore, this practice was abolished through Article 23, Clause 1, but was widely prevalent in the princely states of India before the advent of the Constitution. For instance, in Kahason Thankul versus Simirai Shailai, there was a tradition that through time immemorial, according to which a village leader was entitled on the monthly date to free labor from each household. For a headman and for the first settlement, the village of one male. अच्छा क्या लिख रहा है? To free labor from each of the household, मतलब take labor, to take forced labor from each household होना चाहिए इसमें. This was done by the headman of the village, and according to this practice, one male was proclaimed beggar, was forced to work without any remuneration. This was prohibited by Article 23, subclause 1. Then coming to Chandra versus State of Rajasthan. In this in this particular case, the Sarpanch was held clearly to be in violation of Article 23, subclause 1, because it forbade beggar by the Rajasthan High Court. As the Sarpanch considered each household to send one man along with an iron pan to render free service for the embankment of the village tank. इसमें वही सरपंच मतलब बोला होगा कि हर घर से कोई आदमी भेजो जो एक मतलब वो होता है ना, वो मजदूर लोग जो लोहे का मतलब बर्तन लेकर जाते हैं बड़ा सा, वो टैंक बनाने के लिए काम में लाया जाए. फिर ये दुबर ग्वाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया.
इसमें it was held that the petitioners who had been licensed as porters in Howrah railway station also voluntarily agreed to a 2-hour additional labor agreement with the railway authority, for which some remuneration was to be paid. The High Court of Calcutta concluded that Article 23, yeah, subclause 1 was not violated correctly, because if the state comes and requests somebody to give labor voluntarily or whatever, it cannot be forced, but the porters are licensed by the railways and by the government, so they can always, I mean, ask for people to come forward and give additional labor. Traffic in human beings. This term is usually used for buying and selling human beings, commonly known as slavery, as if they are chattels. This article also included the trafficking of women for immoral purposes. Therefore, such practices are were constitutionally abolished. Forced labor in Article 23, subclause 1. The words other similar form of forced labor is interpreted as the iusdem generis. This article states that the state can impose compulsory services for public services, and this is the only exception in the prohibition against forced labor. जो पोर्टर्स के केस में हावड़ा स्टेशन का जो अभी केस हम लोग डिस्कस कर रहे थे, as per that, the state can always have an exception. Similar forms of forced labor. For instance, bonded labor is forced labor. The state shall ensure that the fundamental rights of people who have been complaining of the violation are not violated and strictly protected if they are of the weak party of humanity and are not willing to fight against a strong and influential opponent who exploits them. It shall also guarantee that private citizens comply with the provisions of the law. फिर इसमें पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इस केस में द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड that in whatever way that it might manifest itself, Article 23, subclause 1 must strike at forced labor. Therefore, not only it prohibited beggar, but also forbade any unwilling labor, whether paid or unpaid. If labor is imposed upon an individual, any remuneration paid to the person would be irrelevant. In another case, isme Madhua Mukti Morcha versus Union of India, the Supreme Court observed that violation of 21 and Articles 21 and 23 had occurred because the state had failed to recognize, release, and rehabilitate bonded labor as provided for under the Bonded Labor System Act Abolition Act 1976. The Supreme Court ruled that Article 23 had abolished bonded labor, which was a serious form of forced labor. So the petitioners won this case. यही होगा और क्या. The अग्निवेश में imposition लड़ा of था ना ये केस, वही है ये. G G. The imposition of forced labor by a prisoner would be covered only if it could be explained as a requirement of public interest by the prohibition under Article 23 of the Constitution. It is said that hard work on proven offenders is to deter others from committing crimes, and to this extent, society is safeguarded from the commission of criminal offences by others. ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक कठोर, मतलब ये क्या बोलूँ मैं, दंड नहीं हम्म. दिया जाए तो लोग तो फिर गलती करते ही रहेंगे, क्रिमिनल एक्ट्स करते ही रहेंगे. While making the constitution, there was a debate for some exceptions in the original draft. Then the Constituent Assembly, headed by Dr. B.R. Ambedkar, adopted subclause 2 regarding public purposes, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे. Compulsory service for public purposes. Article 23, 2. subclause 2. Article 23, subclause 2 is an exception for clause 1 of the article, which enables the state to impose compulsory services for public services. However, the state is prohibited to make any discrimination on the grounds of religion, sex, caste, class, or any of them while imposing the compulsory services for public purposes. The term public purpose covers any clause or objective expressly and essentially concerned with the general interest of the society as opposed to the personal interest of the individual. That will contain the social or economic objectives of Part 4 of the Constitution relating to the directive principles of state policy. For instance,
In this, in the case named Devendra Nath Gupta versus State of MP, Madhya Pradesh High Court held that it is not contrary to Article 23 that the service required to be performed by teachers for public purposes was to be provided for educational surveys, for family planning, for preparing the voters list for general elections, etc. In another case named State of MP versus Jarawal, it was held that the compulsory service which may be imposed by the state for public purposes under clause 2 of the article 23 shall be held in the existence for the defense and social services of the country. ये सही है. The state shall pay for the imposed compulsory services. The Constituent Assembly said in its justification that if compulsory services are required, everyone must be required, and if the state requires service from all and does not pay anybody, no great inequality is in place in the state. When an accused is convicted for rigorous imprisonment and forced to work his sentence, then the forced labor is entitled to be paid suitable compensation by the number of reason by the yardstick of reasonable wages for the work taken from the prisoner. For instance, in the prison reforms case, the prisoners have the right for the work extracted from them through the sentence to pay reasonable wages. There is no cause that a convict should forfeit the freedom to receive compensation from the state for for the labor extracted from them. The right not to be violated under Article 23 is guaranteed for the citizens. Thus, there was a creation of an expression of committing a crime and going to acha, committing a crime and going to prison is a better mode of living and earning wages by giving them better facilities and payment of wages to them. As a result, this argument advanced and was disapproved in the case named Gurdev Singh versus State of Himachal Pradesh. ये सर समझ में नहीं आया मुझे क्या लिख रहा है. Creating an impression of committing a crime. बहुत गंदी अंग्रेजी है भाई, बहुत गंदी अंग्रेजी है उसकी. अरे हिंदी में लिखता फिर वो ज्यादा अच्छा रहता. पता नहीं कैसे लोगों ने उसको वो किया है, अप्रूव किया, समझ में नहीं आता. एनीवे मेन मुद्दा ये है कि स्टेट यदि चाहे तो लोगों का सर्विसेज ले सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है. आई थिंक दिस इज बेटर. Ban against traffic in human beings is absolute, but ban against forced labor is subject to one exception as mentioned in Article 23, subclause 2. Let us come to Article 23, subclause 2. The state can impose compulsory services for public purposes like national defense, removal of illiteracy, or the smooth running of public utility services like water, electricity, postage, rail, and air services. In making such provisions compulsory for public purposes, the state cannot discriminate on the grounds of religion, race, caste, or class, or any of them. Sex is not a prohibited ground of discrimination, which indicates that women could be exempted from compulsory public service. The term class is used in the purely in the economic sense. However, no such law at the central level is there in India. For a brief period in Nagaland, there was a law that said that in case of impeding able-bodied persons, in case of the law was that able-bodied person may be called to join the army. Important judgments on the right against exploitation, Article 23. People's Union for Democratic Rights versus Union of India, AIR 1983, Supreme Court, page 1473. The Supreme Court interpreted the scope of Article 23. The petitioner scrutinized the working conditions of various people employed in Asiad projects. It was discovered that the laborers were subject to great exploitation. They were not given minimum wages, subjected to inhuman working environment. So a public interest litigation was filed. Justice P. N. Bhagwati observed
that the scope of Article 23 is vast and unlimited. It is not merely beggar, which is prohibited, but this article strikes at forced labor in whichever form it may exist. Every form of forced labor is prohibited. No person shall be forced to promote labor or services against his will, even if it is mentioned under a contract of service. That contract becomes void automatically. The word force has a very wide meaning under Article 23. It not only includes physical or legal force, but also recognizes economic circumstances which compel a person to work against his will on less than minimum wage. Then, in the case of Sanjit Roy versus State of Rajasthan, AIR 1983, Supreme Court, page 328. In this case, the state had employed people for the construction of roads. Their work was allowed under the Famine Relief Act. These workers were paid way less than the minimum wages. It was contended by the court that this payment of wages lower than the minimum wages was violative of Article 23 of the Constitution. The court held that the state is not allowed to take undue advantage of the helplessness of people with an excuse of helping them to meet the situation of famine or drought. The court observed that they must be paid fairly for the work for which they have put in effort and sweat and which provides benefits to the state. Then that same case, Bandhua Mukti Morcha versus Union of India, AR 1984, Supreme Court 802, page 802. Bandhua Mukti Morcha is an organization that works against the prevalent system of bonded labor in India. This case is special in the sense that the court for the first time accepted and treated a letter written to Justice Bhagwati as a petition for public interest litigation. The letter described the ordeal of a large number of workers in the Faridabad district of Uttar Pradesh who are working in inhuman and intolerable conditions. The court laid down guidelines for the determination of bonded laborers and pointed out that it was the duty of the state government to identify, release, and rehabilitate the bonded laborers. ये क्या है? फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी कहाँ से आ गया? फरीदाबाद तो ये हरियाणा में है ना? हाँ। गलत लिखा है सर, मैं भी गलती से मैं स्किप माय माइंड एक्चुअली, इट्स माय मिस्टेक आल्सो. फरीदाबाद इज नॉट इन यूपी. The court laid down guidelines for the determination of bonded laborers and pointed out that it was the duty of the state government to identify, release, and rehabilitate the bonded laborers. Article 24, इमरजेंसी के prohibition. टाइम में इंदिरा जी ने जो 20 प्रोग्राम चालू किया था उसमें भी बॉन्डेड लेबर के बारे में था. जी जी, हाँ, दैट 20 पॉइंट प्रोग्राम में कंपलसरी सर्विस था. नहीं 20 ये बॉन्डेड लेबर को हटाया था उन्होंने. हाँ, हटाया. मैं बोल रहा हूँ उस समय था, मतलब कंपलसरी सर्विस में वो बॉन्डेड लेबरर्स का वो नहीं था. मतलब the person had to be given some compensation for that, some remuneration which should be at least the minimum wage. Article 24, prohibition of employment of children in factories, etc. Article 24 must be read in conjunction with Article 39E and 39F of DPSP. ये क्या डिस्प्लेस्ड पर्सन, सोशली प्रिविलेज्ड पर्सन की बात कर रहा है क्या? क्या है ये? Which provides for protection. ये क्यों लिखते हैं abbreviation? This is actually prohibited in the high courts. कोई abbreviation लिखने से जज गरम हो जाता है, बोलता है am I to find out what you mean by this? एफ बात कर रहे हैं ना? जी. Children are given opportunity and facility to develop in health manner and in condition of freedom and dignity, and the childhood youth are protected. यही बात कर रहे हैं ना ये? लेकिन वो डी क्या लिखा था, DSPS क्या लिखा हुआ था, 35 of DPSP. तो इसमें इलाबोरेट करने से उसका क्या मतलब, कलम टूट जाता है जो लिखा है. Article 24 prohibits employment of children below 14 years of age in any factory, mine, or any other hazardous employment. The Supreme Court in People's Union for Democratic Rights versus Union of India, reported in AIR 1982, Supreme Court, page 1473, held that during building construction work, which was such hazardous employment where children below the age of DPSP 14. डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात कर रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा.
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हाँ, तो इसीलिए आर्टिकल 39E एंड आर्टिकल 39F ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये लिख देता है, लिखने में क्या दिक्कत था? इट ये किसी शुडंट बी टेक। ये किसी बंदे ने लिख के दिया होगा कि तुम सर छाप दो, तुम्हारा नहीं नाम नहीं अच्छा हो जाएगा। कौन है ये? सर अमित शाह? या किसी नहीं इसके नहीं किसी प्रोफेसर ने लिख के दिया होगा? हाँ तो नहीं, सवाल ये कि द पब्लिक वोंट नो ना। कुछ भी हम लोगों को कोई कुछ भी तकलीफ हो रही है समझने में, तो you cannot presume that everybody will understand what that stands for. Directive principles of state policy in abbreviation, it cannot be presumed that way. G. Article 24 prohibits employment of children below 14 years of age in any factory, mine, or any other hazardous employment. The Supreme Court in People's Union for Democratic Rights versus Union of India, reported in the year 1982, Supreme Court 1473 held that building construction work was hazardous employment where children below the age of 14 should not be employed. The court also pointed out the horizontal nature of Article 24. Prohibition of Article 24 could be enforced against everyone, whether state or private individual. अच्छा, यस। इसमें स्टेट को भी घुसा दिया। हाँ। In MC Mehta versus State of Tamil Nadu, in this case, MC Mehta brought before the court the plight of children engaged in Sivkashi cracker factories, ये South में. In this case, the Supreme Court directed setting up of Child Labor Rehabilitation Welfare Fund and asked the employer to pay rupees 20,000 as compensation to each child. India is also a signatory to the Convention of दिस Rights of. केस इज ऑलवेज आस्क्ड इन क्वेश्चन पेपर है, कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन में आता है ये। ये लॉन्ग आंसर शिवकाशी करते वाला। हैं। एमसी मेहता शिवकाशी केस आता है, वो ऐसा नहीं आता एमसी मेहता, आएगा शिवकाशी क्रैकर केस के बारे में, ऐसे करके आ हाँ, जाएगा। क्योंकि child डायरेक्टिव। labor employment was there. हम्म। India is also a signatory to the Convention on the Rights of Child, 1989. Article 32 of the Convention requires that each state party to the Convention shall protect the children from economic exploitation and any hazardous work. India ratified the Convention in 1999. In pursuance of the obligation under Article 24 and international instruments, Parliament has enacted various laws against child labor. Now, Factories Act 1948, Mines Act 1952, the BD and Cigar Workers Conditions of Employment Act 1966, the Apprentices Act 1961, the Employment of Children Act 1938, and other similar acts. Now, Child Labor Prohibition and Regulation Amendment Act 2016 amended the Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986. The amendment prohibited the employment of children below 14 years of age in all occupations and industries except those run by the child's own family. Before the amendment, employment of children below 14 years in domestic work was completely legal. A complete prohibition has been imposed on the employment of child labor, that is, a person below the age of 14 years in any establishment, whether hazardous or not, is not permitted. A child is not permitted to work only to help the family. A child is permitted to work only to help the family enterprise after school hours or during vacation. ये important है. A child is permitted to work only to help the family in family enterprise after school hours or during vacation. अच्छा, after school hours होगा तो कब पढ़ेगा, होमवर्क कब करेगा? अब ये चीज मैं देखता हूँ सर, जितने इन मतलब फैमिली एंटरप्राइज आफ्टर स्कूल आवर्स आर ड्यूरिंग during vacation, वेकेशन। but this is also strictly not followed. In my यस यस place, यस, I've observed that आफ्टर स्कूल आवर्स। ये जितने बनिए होते हैं ना, इनके यहाँ देखिएगा, हाँ स्कूल हाँ। से डायरेक्टली यूनिफॉर्म पहनकर बस्ता एक तरफ फेंक कर बैठ जाता लड़का। अब वो पढ़ेगा कब और होमवर्क कब करेगा, क्या करेगा? ऐसे ही नाम लिखा हुआ है स्कूल में। India finally ratified the Convention number 182 of the International Labour Organization, which deals with prohibition and elimination of the worst forms of child labor and provides that no child shall be employed in a hazardous occupation. Interestingly, India is one of the last countries to ratify the convention. Nevertheless, the act introduced
a new category called adolescents, which cover persons between 14 to 18 years of age. The amendment permits the employment of adolescent labor except in hazardous processes or occupations. यानी कि इसका 14 से 18 मतलब साल वाले को आप एम्प्लॉयमेंट ले सकते हो एक्सेप्ट इन हैजार्डस प्रोसेस conditions ऑपरेशन में, ठीक है। in occupations. The number of hazardous occupations and processes have been reduced from 83 to only 3. Mining, explosives, occupations mentioned in the Factories Act 1948. It leaves children open to employment in all other kinds of hazardous industries, including construction, asbestos, brick, brick kilns, glass factories, and garbage picking. आप बोलो। नहीं कोई पकड़ता भी नहीं है ना। उल्टा कर दिया ना। दिस इज करेक्ट। ये एग्जाम्पल सही दिया है, ये एग्जाम्पल एकदम सही दिया है, आज भी दिखाई देता है। खास करके एस्बेस्टस इज वेरी डेंजरस। इसका मतलब पार्टिकल्स लंग्स में जाने से हाँ, टीबी कैंसर दोनों होता है एकदम। ग्लास फैक्ट्रीज वहां भी मतलब हैजर्डस मतलब ऑक्यूपेशन है वो। It provides for the setting up of child and adolescent labor rehabilitation fund, which all the amounts of acha, in which penalty has to be realized. This provision has been drawn from MC Mehta judgment. अच्छा penalty लेकर क्या होगा जब तक बंद नहीं करेंगे? The amendment has been widely criticized for being toothless and correct, and instead of eradicating child labor by its very root, it rather makes way for child labor to thrive. अभी यही तो हम लोग बोल रहे थे। यस। ये कब का है अमेंडमेंट? 2016। 16 चाइल्ड लेबर क्या क्या है? 86 का एक्ट था, 2016 में अमेंड किया गया। तो टूथलेस तो है ही। The existence of practices like exploitation हाँ हाँ, and child labor is a blot on civilized society. The truth remains that ट्रूथ despite रिमेन्स numerous laws न्यूमरस made in लॉज purpose of doing so, we are still far from from reaching achieving a status civilization. of zero exploitation. Instead, India is home to 10 million child laborers and more than 42.7 million children are out of school. The exploitation of the weak by the stronger continues unabated. Forced labor, bonded labor, trafficking continues to exist. The thrust needs to be on education awareness, concerted efforts on the part of concerned authorities, generation of funds, creating employment opportunities, and curbing the evil. सर मैं आपको एक एग्जांपल दूं। आई गो टू सर्टेन कंपनीज, दोज कंपनीज आर वेरी बिग, some are involved in the I mean what should I say, manufacturing of steel items, construction activity. There I find in the offices that in the morning one has to enter at 9:30, but there is no time for leaving. Some people leave at 8 Oh, o'clock, some at 9 o'clock, some at 10:30, some stay at night, and they are told कि भाई तुम काम आज का खत्म करके नहीं जाओगे तो कल कल से मत आना। And the condition in my state being of the condition of I mean employment in my state being very poor, nobody bothers about these things ना। मजबूरी में लोग करते ही रहते हैं। अच्छा लेट आने से, 15 मिनट लेट होने से आपका आधा दिन का पगार गया। छुट्टी उट्टी कुछ नहीं है। अच्छा आप बोलोगे कि मेरे पिताजी बीमार हैं, तो बोलेगा आप डॉक्टर हो क्या? आप डॉक्टर हो, वहां जाकर खड़े रहोगे पिताजी के सामने, पिताजी ठीक हो जाएंगे? जो करना है घर वालों को बोलो, वो करेंगे अपना, तुम अपना काम करते रहो। दिस इज द कंडीशन, ये मेरे सामने हो रहा है। तुम्हारा फेवरेट। जी ये भी अंग्रेजी बहुत अच्छा लिखती है हीरोइन। ठीक है। क्या बोल रही है? रुक जा यार। नहीं वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं कुछ हाँ, अच्छा लिखा कि नहीं लिखा है?
नहीं ठीक है, वो जो हम लोग पढ़ रहे थे वही है। द कोर्ट नहीं, हेल्ड इसमें पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। In this case, the court held that the government could not exploit the workers and they were entitled to fair wages and working conditions. अच्छा, ये केस तो हम लोग कवर कर दिए हैं, बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये देखो यहाँ बराबर लिखा है ना, हरियाणा। हाँ हाँ, हरियाणा। The court directed the government to take measures to eliminate bonded labor and provide rehabilitation to the victims. सही है। The Supreme Court in this case, State of Tamil Nadu versus Nalini, the court held that trafficking in women for the purpose of prostitution was a violation of their fundamental rights. The case was related to abduction and trafficking of a young woman who was forced into prostitution. To क्या further the बात agenda, है? to further the agenda of prohibiting human trafficking and bonded labor, the Government of India has enacted several laws to prevent trafficking in human beings and forced labor. The Immoral Traffic Prevention Act 1956 prohibits prostitution and related activities, but still this goes on unabated. The Bonded Labor System Abolition Act 1976 prohibits bonded labor and provides for the rehabilitation of bonded laborers. The Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986 prohibits the employment of children in certain occupations and regulates the condition of work of children in other occupations. Article 24 why employment of children below the age of 14 in mines, factories, and other hazardous places of employment. This article recognizes the right of children to have a childhood free from exploitation and to receive education and training for a better future. This article states no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment. The article states that no child, the same चीज repeat किया गया. The provision also applies to the employment of children in any other form of work that is likely to interfere with their education or be harmful to their health or mental or physical development. The Constitution recognizes that children are vulnerable and require protection from exploitation and abuse. The prohibition of child labor is essential for the development and well being of children and is in line with the international standards set by the United Nations Convention on the Rights of the Child. फिर एमसी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ वही तमिलनाडु, वो शिवकाशी इसमें केस है ये। शिवकाशी वाला। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द छोड़ दो, एम्प्लॉयमेंट ऑफ नहीं नहीं, अच्छा ये क्या है? ये कौन violated बना? fundamental rights अच्छा, because it interferes with educational, mental and physical development. यही बोलना चाह रहे। ये पढ़ो तो The हमारे। government also introduced the Child Labor Prohibition and Regulation Amendment Act 2016 and the Child Labor Prohibition and Regulation Amendment Rules 2017 to further protect children against exploitation. In recent years, there has been an increase in the awareness of child labor in India. The government, along with civil society organizations, has taken several initiatives to eliminate child labor and provide education and training to children. The government has also launched programs like the National Child Labor Project to rehabilitate child laborers and prevent the exploitation of children. ये शॉर्ट में है लेकिन फिर भी सही है। So we have almost covered everything, sir. एक मिनट, इसमें थोड़ा दूसरा देखता हूँ। ये तो खैर हो गया। ये क्या है? संजीव राय दीना लेजिस्लेटिव प्रॉपर्टी एक्सप्लॉइटिंग फोर्स लेबर, इमोरल ट्रैफिक, ट्रेड यूनियन एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेज, मिनिमम वेजेज एक्ट। इसको थोड़ा पढ़ते हैं, ये अच्छा है। अवगढ़ साहब आना है क्या? अंदर आ जाओ अगर आ सकते हो तो। लिंक तुम्हें है कानून उनके पढ़, पास? वो दिखाई उधर कुछ लिख रहा है, वो इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं, लिंक है उनके पास। नहीं नहीं, अगर वो मांगेगा तो दूंगा ना मैं, नहीं तो बिना मतलब किसी को घुसने नहीं दूंगा यहाँ पर मैं अभी।
ठीक है सर। द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, दिस एक मिनट एक्ट रुको, इंश्योर्स। रुको, 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 ऊपर अच्छा जाना। अच्छा, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। ये Right against exploitation under the Constitution, Articles 23 to and 24. Our country had a एक मिनट पढ़ना long-lasting है, history of यहाँ slavery पे in ये क्या है? हाँ, meaning of right against exploitation. As per the Oxford Dictionary, the literal meaning of the term exploitation is the forceful oppression of a person that delivers or renders some services. The oppression can be through non-payment of money, forcefully employing at a low wage rate, human trafficking, etc. This exploitation is against the doctrine of basic structure of the Indian Constitution and also violates a preamble of the Constitution and directive principles of state policy. The protection against such exploitation is given under Articles 23 and 24 of the Constitution. आर्टिकल 23 बता रहा है फिर वो सेम चीज। ये डबल जी क्यों लिखता है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट। समझ नहीं आ रहा होगा इन लोगों को। हाँ, हाँ, समझ नहीं आ रहा होगा ना, मतलब भीख टाइप टाइप मांगना और करके मैंने ऐसे जबरदस्त। मार दिया उसको वैसे ही करके। हाँ, तो भीख मांगना और ये दोनों में बहुत अंतर है। देखो ये पूरा बेगर लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने हाँ देखा। हाँ। ये देखो, इज नोन एज बॉन्डेड बेगर। हम्म। नालायक कहीं के कुछ भी लिखते हैं नहीं, लोग। गलत लिखा है ना पूरा। ये तो हम लोग सर बहुत पहले जब हम लोग लॉ स्टूडेंट थे हम लोग पढ़े थे वो। प्रोहिबिशन ऑफ अदर सिमिलर फॉर्स्ड लेबर प्रैक्टिसेस। ये पढ़ो इसको। नहीं नहीं, मैं सिर्फ देख रहा हूँ, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं शायद। हाँ हाँ, पढ़ चुके हैं इसको। क्लास की बात कर रहे हैं ना वो कि। आईपीसी 374 आईपीसी में पनिशेबल है ये हम्म, चीज। ये एक्सेप्शन है, ठीक है। ये क्या लिख रहा है मुझे समझाओ तो थोड़ा सा, ये क्या लिख रहा है? ये in the light of various judgments of the honorable courts, the state may impose the following services. If a departmental inquiry is pending against a government servant, the state can compel the servant from retiring till the time of completion of proceedings, even though he has reached the age of retirement superannuation. मतलब क्या बोलना चाह रहा है? मतलब जबरदस्ती रोक के रखेगा? ऐसा कभी ये यहाँ पर नॉट कहाँ आएगा? ही हैज नॉट रीच द एज ऑफ रिटायरमेंट, ये बोलना चाह रहा है, या नहीं बोल रहा है सिचुएशन इवन नॉट दो कंप्लीट करके बोल रहा है? इवन दो he will be stopped from retiring, he'll be stopped from retiring pending inquiry even though he has reached the age of superannuation, ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है। नो नो नो, लेकिन ऐसा ऐसा नहीं होता ना, और सुपरविजन के बाद में वही तो तो काम मैं बोल करना रहा हूँ चाहिए सर। ना। मेरे मेरे सामने अभी ऐसा आज तक ऐसा केस आया ही नहीं ये है, इसीलिए मैं यहाँ पर ये इवन दो ही हैज नॉट होना चाहिए यहाँ पर। यहाँ हाँ, पर तो आया है। गड़बड़ कर दिया ना, मैं तो बोल ही रहा हूँ रिटायरमेंट सर। से पहले उसको निकाल सकता है ना, ये है ना बिल्कुल कहानी। बिल्कुल बिल्कुल। फिफ्टी ऐसा सिक्स कुछ ए में। थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। मान लीजिए बाद में प्रूव होगा इन द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कि वो हम्म, मतलब जो है देयर वर नो चार्जेस अगेंस्ट हिम, द चार्जेस आर डिसप्रूव। हाँ, तो फिर क्या है, उसको एक्स्ट्रा पैसा देगा फिर? मतलब एक साल और रोक के रखेगा तो फिर अलग से कुछ देगा उसको बेनिफिट? ऐसा थोड़ी है। The state is empowered to impose a duty on a person to do social service for the upliftment and development of our society under the National Service Act 1972. नहीं, ये सही है। The state can also compel a prisoner to do hard labor even though he will earn the minimum wage in return if he is undergoing the punishment of rigorous imprisonment. ये भी ठीक है। फिर वही वही सब केस के बारे में बोल रहा है जो हम लोग कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, ये कर चुके हैं। अच्छा, ये दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये देखते हैं। इन दिस केस द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड that the prisoner also had the right to receive a fair remuneration in lieu of the services rendered by him. Thus, if a prisoner is not paid for his work done, then it will be treated as forced labor and the provision of Article 23 will be violated. नहीं, वो पैसा जमा होता है ना जेल में, करेक्शनल होम। अब आजकल तो जेल बोल नहीं सकते हैं, करेक्शनल होम जिस समय बोलते हैं। केस फाइल हुआ होगा उस समय नहीं दे रहे होंगे ना, ऐसा भी होगा ना हाँ कुछ। हाँ 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 हाँ। तो नहीं, मैं बोल रहा हूँ करेक्शनल होम तो नाम दे दिया, लेकिन क्या करेक्शन होता है ये आप हम दोनों जानते हैं। The Immoral Traffic Prevention Act 1956. This statute governs those conditions wherein human trafficking
is done away with the objective of sexual exploitation. This is a special act which makes this practice a cognizable criminal offense, which is punishable with strict punishment. The Trade Unions Act 1926, the major objective behind the enactment of this statute was to protect the rights of daily workers against exploitation from high-level managerial policy decisions. Thus, trade unions were established that support the rights of workers. The enactment of this statute aligns with the provision of Article 19 1C, which empowered a person to form a union or association. The Payment of Wages Act 1936. 1926 है, 1917 में रसिया में रेवोल्यूशन हुआ था ना? जी, तो ये उसका आफ्टर इफेक्ट है लगता है। इन लोगों ने, ब्रिटिश जी, लोगों ने जी, इसको लेकर के आके जी, रखा था। जी, जी। इसको निकाल देना चाहिए। बहुत बेकार का एक्ट है ये। बेकार है, लेकिन इसमें चेंजेस ला सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण आपको दिया, कुछ लोगों को मतलब जब जबरन जो है 8 घंटे के 8 घंटे से ज़्यादा जो काम करवाते हैं, वो भी तो सही नहीं है। मतलब उपाय नहीं है, देखिए। नहीं, जहाँ नहीं, मैं ये नौकरी बोल रहा हूँ कि इसमें इसको या तो अमेंड करो पूरा-पूरा, जिस तरीके से ये है, जिसमें कि ये लोग डिस्टर्ब कर देते हैं। अब बम्बई में जितनी भी वो फैक्ट्रियाँ थी पहले वाली, तो दत्ता यहाँ सामंत भी तो वही ने था ना, मजा यहाँ बजाया यहाँ भी ना। तो सीपीआईएम के टाइम में जो वही तो। कीड़ा घुसा है, वो आज तक निकला नहीं है। फिर कानपुर में इतनी अच्छी फैक्ट्रियाँ थी, सारी की सारी सब बिल्कुल, सत्यानाश हो बिल्कुल। गई। हाँ, हाँ। बॉम्बे का तो कॉटन मिल्स का मैं खुद देखा हूँ सर। ये कमला मिल्स, ये देखो, जुपिटर मिल्स, क्या-क्या और था। फिर सारा मेरे सामने ही तो गड़बड़ शुरू हुआ था उस समय। दिस एक्ट एंश्योर्स पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936. दिस एक्ट एंश्योर्स that the authorities pay the wages or salaries to the workers in a timely manner. Further, there shall be no undue deduction in the salary. Minimum Wages Act 1948. This act was enacted to eradicate the practice of beggar or bonded labor. छी! Under this statute, every person is entitled to a minimum क्या basic यार, wage ये बेगर नहीं or है भाई, salary. ये बेगर नहीं है। प्लीज डोंट रीड दिस बेगर। ये बेगर नहीं है, हाँ? ध्यान रखना। ये बेगार है, बेगार। It's हाँ, actually a local word. हम लोग बोलते हैं कि बेगार काम करवा रहा है। बेगार, बेगार, हाँ। हाँ, बेगारी कर रहा है क्या? हाँ, हाँ, बोलते हैं ना ये चीज हम वही, लोग। वही, हाँ, हर दैट हर इज, भाषा में बोलते हैं इंडिया में। हाँ, Under this statute, every person is entitled to a minimum basic wage or salary as per the nature of the activity performed by him. This minimum wage is determined by the respective state governments as per the geographical location. ठीक है। अब आते हैं Factories Act 1948. This act ensures that a business shall adopt adequate measures to ensure good health and a safe environment for the workers. Under this act, the liability of employers is absolute in nature and it attracts strict punishment. Further, Article 42 of the Constitution also puts a responsibility on the state to ensure just and humane conditions of work. Equal Remuneration Work Act, Equal Remuneration Act ये इमरजेंसी 1976. टाइम का एक्ट है, बहुत अच्छा एक्ट था ये, देखो। The right to equality is provided under Article 14 of the Constitution, and it encompasses the right to receive equal pay for equal work. There shall be no discrimination on the grounds of religion, caste, sex, etc. in the matter of receiving remuneration. The Act ensures that women shall also receive equal amount of money as provided to men if the work is of the same nature. If the employer fails to do so, then he will be penalized for the same. Article 24 of the Indian Constitution. In the present times, we still see some small children पढ़िए, working in पढ़िए, hotels or जजमेंट पढ़ते हैं बस, इधर देखते हैं क्या बोल रहा है। landmark judgment. People's Union for Democratic Rights versus Union of India. Now, construction work का बोल रहा है. So, ठीक, Honorable Court held that construction place falls under the ambit of hazardous place of work, and this kind of work is violative of Article 24. MC Mehta वही वाला शिव शिव काशी वाला. कांति, हाँ, Legislation of protection of child rights. In order to achieve the objectives of Article 14, our legislature has enacted the following legislation. The Child Labor Act 1986. This is the principal act that governs almost all cases of child labor in India. This act bars child labor in hazardous places and also prescribes guidelines in those areas wherein the children are employed in non-hazardous sectors.
the Mines Act 1952. This act clearly prohibits the working of children below the age of 18 years in a mine. The threshold of age is set high under this act because working in a mine can pose a severe threat to a child. The Factories Act 1948. How This can it act be? prohibits How can it be under Article 24? 48 ये Factories Act. 1948 है ना, 24 में हाँ कहाँ जाएगी? 48 हाँ हाँ ये जो लिख रहा है ना ऑब्जेक्टिव ये ऑफ सही हाँ वही नहीं, तो ये वही 86 हाँ वो तो ये गलती कर दिया है। अब अगर ये कोई लेंदी क्वेश्चन आएगा, किसी बच्चे ने इसमें लिख दिया तो फैक्ट्री एक्ट, फिर तो काट एग्जामिनर देगा पूछा ना करेगा उसका। पूरा काट देगा फिर क्योंकि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन 50 1950 में आया उसके पहले कैसे मतलब बता रहे हैं द प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 as per the activity as the activity of plantation doesn't fall within the scope of hazardous places. Thus, the minimum age requirement under the Act is 12 years. However, there's a special provision under this Act which states that regular fitness checkup of all children shall be undertaken. क्या खेत में ट्रैक्टर बुलाएंगे कि भाई पिटे के लिए? हाँ मॉर्निंग में जब उनको लेके जाएंगे कि चलो ठीक है, तुमको धान लगाना है या धान काटना है, तो वहां पर डॉक्टर को बुलाएंगे कि भाई पिटे के नहीं है? क्या ये कुछ भी। इम्प्लीमेंट करना इम्पॉसिबल है. The Motor Transport Workers Act 1961. As per the provision of this act, a child below the age of 14 years is strictly prohibited to be employed in the motor transport sector. The गाड़ी साफ Apprentices कर Act. सकते हो ना? हाँ The गाड़ी साफ कर Apprentices सकते Act. हैं ना? गाड़ी साफ तो करवाता ही है सब लोग. The Apprentices Act वो तो 1961. चौराहे पे आके खड़े हो जाते हैं कि साहब गाड़ी साफ कर दो क्या? जी जी जी. That is because India, in spite of being a welfare state, is unable to provide employment to everybody. The ठीक है। Apprentices Act 1961. The main objective of this act is to ensure that a child below the age of 14 years shall not undergo apprenticeship training. अच्छा फैक्ट्री में अप्रेंटिस बना के आप रख लो वो पॉसिबल नहीं है बिलो द एज ऑफ 14 years. Establishment of National Commission for Protection of Child Rights. This was set up in 2007 under the provision of Child Rights Protection Act 2005. The commission was established with a mandate to ensure that all laws, regulations, and administrative measures shall be in consonance with the interests of the child. Further, it ensured that new initiatives shall be taken to fulfill the obligation of the state under Article 24 of the Constitution. This commission was set up both at the center and the state levels, and it is working relentlessly to protect the rights of children, especially in the domain of sexual and physical harassment of children. जैसे विमेंस कमीशन है वैसे ही ये चिल्ड्रंस कमीशन है कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स So Article 23 says that somebody, मतलब everybody should get fair remuneration for the work done. करेक्ट करेक्ट And second is it abides for forced labor. जी And जी Article 24 is to the children के लिए वो कर रहा है ना? जी Children जी should जी not be. Anyway, ये तो हो गया खत्म। इसके बाद एक और था, थोड़ा रिलेवेंट था, उसको भी थोड़ा देख लो क्या बोल रहा है। इतना नॉलेज का तो बिल्कुल ओशन है ना, कुछ भी पढ़ेंगे तो कम ही पर रहता है। ये व्हाट इज दिस? हाँ जितना बार पढ़ेंगे उतना ही अच्छा है प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर पढ़ो इसको एक मिनट, कहाँ से पढ़ना है ये देखो, थोड़ा सा यहाँ से पढ़ो, ये पढ़ो। हाँ Under Part 3, there are certain fundamental rights bestowed by the Constitution which are enforceable against the entire world, and they are found inter alia in Article 17, 23, 24, 1, and Article 24, 1. Article 23 was incorporated in the Constitution to prohibit traffic in human beings and beggar and other similar forms of forced labor. कम से कम यहाँ सही लिखा है.
यहाँ सही लिखा है. India is the largest democracy in the world. The track of progress and development has a great struggle concealed behind it. India has been the victim of slavery since centuries altogether. It took several centuries to get India free from slavery, and finally, after the enactment of the Indian Penal Code 1860, slavery was completely abolished in India. The framers of the Indian Constitution, through Articles 23 and 24, expunged such practices. The Constitution of India guarantees liberty and dignity to every individual, hence leaving no scope for exploitation, slavery, and ill treatment. Article 23 of the Indian Constitution expressly prohibits human trafficking, forced labor, and other similar activities. It also states that any violation of this provision will be considered as an offence, and the person acting in contravention of the law will be penalized in accordance with the law. Features of Article 23: right against exploitation as छोड़ो prescribed. दो, छोड़ो 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 छोड़ो, रहने दो. ये सब पढ़े हैं हम लोग. ये क्या बोल रहा है? ये पढ़ो, एक्सेप्शन. Exception to Article 23. Under Clause 2 of Article 23, the state is allowed to impose compulsory services for public purposes like national defense, removal of illiteracy, and other public utility services like electricity, water, air and rail services, postal services, etc. Provided that, in making such service compulsory for public purposes, the state, however, cannot make any discrimination on the basis of religion, race, caste, or class, or any of them. Viewers, please note, two words are missing here. One is sex and another is color. वुमेन के बारे में एप्लीकेबल नहीं है. ऐसा नहीं कि वुमेन जी. बोले कि हमारे लिए ऐसा नहीं हाँ, होगा. वो तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. हाँ, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स हो गया, फोर्स लेबर हो गया, फिर क्या बोल रहे हैं, बंधुआ मजदूर हो गया. आर्टिकल, हाँ, ये फिर से क्या बोल रहे हैं यहाँ पे. Devendra versus Nath Gupta. The Madhya Pradesh High Court in this case ruled that even though there was no allowance, अच्छा, ये teachers वही. were expected. No, teachers were expected to provide a service हाँ, वो for सर्वे public वर्वे करने के लिए purposes. प्लानिंग प्लानिंग और हाँ इलेक्ट्रिक हाँ, तो सर्वे के लिए भेजते हैं ना टीचर्स हाँ, को. ये तो पढ़ लिया ना. आप जी. जब तो उसके लिए कूली जो था ना बेचारा, हाँ 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 हाँ. उसको एक्स्ट्रा काम करवा रहे थे. ये क्या है? कौन सा दरबार वाला था? गवाला. In Durbar Goala versus Union of India, it was held that there is no forced labor or beggar if an individual willingly decides to do work or do extra work to gain other return benefits. Other return benefits. These two, this थोड़ा और phrase is पैसा मिल जाएगा, important. आज मेरे को जरूरत है, कुछ और काम चाहिए तो कर सकता है वो, है ना. हाँ, तो अदर बेनिफिट्स, उसको कुछ अदर रिटर्न बेनिफिट्स चाहिए तो कर सकता है, बिकॉज इज गेटिंग अदर रिटर्न बेनिफिट्स इन रिटर्न. Raj Bahadur case में it was held that Article 23 specifically prohibits trafficking in human beings or women for immoral purposes. Landmark judgments. People's ये Union of पढ़ लिया पढ़ India लिया for पढ़ लिया. Democratic Rights. जी. दीना पढ़ लिया. संजीत रॉय भी पढ़ लिए हैं. हाँ, ये क्या है? वही है ना. हाँ, वही दीना, है. हाँ कंक्लूजन हाँ. पढ़ो. हाँ. The poorer parts of society continue suffering some severe problems under Articles 23 and 24 of this Convention against Trade in and child labor. Such actions are constitutionally prohibited by statute, as well as ground rules and requirements laid down in the protection of slavery legislation, which are also protected by judicial proceedings in Parliament, and in the context in Slave Labor Emancipation Act of 1976, of which Child Labor Act of 1986. ये क्या लिख रहा है? They must all be conscious that child trafficking is unethical, and this recognition will not only be limited to media commercials. This will be applied to towns. For poor women, girls, group of women should be formed. I- ये वो अपना ओपिनियन दे रहा है, ये उतना कोई काम का नहीं. If one life was of subject and at the whims and other individual, the concept of equality before law, fair right and other in the manner will have little sense. What the constitution, ये तो कम्युनिस्ट की बात कर रहा है. हाँ, तो ये कोई मतलब
कम्युनिस्ट चाहिए, इतना कम्युनिस्ट। इम्पोर्टेंट मैं एक झलक में देख लिया मैं वो इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। बच्चा है लगता है, कोई लड़की है क्या है, कोई ऐसे ही बच्चा है, इसको ये इसने कोई पेपर प्रेजेंट किया है कहीं पे। हो सकता है। नलीना बीबी, अच्छा। हु इज दिस आर्टिकल ऑन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, कौन है ये? हाँ चलो ठीक है भाई, फोटो लगा दिया दो उसमें। डिजर्टेशन है ऐसा कुछ ये? हाँ 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 हाँ, प्रेजेंटेशन है। हाँ चलो बंद। अब नेक्स्ट टाइम हम करेंगे फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस एंड फ्री प्रोफेशन। जी 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 देखते 25 तो ये है, 25 है ना ये? जी। और फिर 26 में क्या है फिर? अभी बोल देता हूँ सर। देखो 26 में अभी क्या एक सेकंड सर। है? 25 है एंड फ्रीडम ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन कॉन्शियस। है। नहीं, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन 25 हाँ है। हाँ, 26 है मैनेज एवरी। रिलीजन, रिलीजियस अफेयर कुछ है। नहीं, 26 में वो है ना, मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल हाँ पर्पसेस, वो माइनॉरिटीज। मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, हाँ, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 27 है, no person shall be compelled to pay taxes for promotion and maintenance of any particular religion. ओके। Article 28, no religious instruction shall be provided in any educational institutions wholly maintained out of state funds. ये 25 से 28 तक करीब करीब यही है सब, रिलीजन के ऊपर ही है। और 29 ये क्या है कर फिर? सकते। 29 है आपका, बता रहा हूँ सर। 29 है माइनॉरिटीज का, टू हैव their लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, अच्छा, एक मिनट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये सारे के सारे एक ही हेडिंग में आ रहे हैं क्या? ऐसा लगता है क्या? तो कर दीजिए इसको फिर, वो 25 एक से मिनट लेकर देख, 30। मैं इसको देखता हूँ थोड़ा सा, ये क्या बोल रहा है कि मैं तो अपना कहाँ? नोट से बता रहा हूँ, छोटा जो नोट्स है पार्ट उसमें पार्ट एक एक लाइन में लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, वो पार्ट 3 ना, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 इंडिया में, जी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में है ना वो। एक बार उस दिन हम लोगों ने पहले खोला था ना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का, जी जी जी। फंडामेंटल राइट है। अच्छा इसके बाद 22 23 हो गया। 23 इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है। हाँ, देन ये 24 एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 14, वो तो कवर कर लिए हम लोग। 25 है, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right to freely profess, practice and propagate religion। 26 है, every religious denomination or sect shall have the right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes, to manage its religious affairs, to own and acquire property, and to administer that property according to the provisions of law। 27 है, no person shall be compelled to pay any taxes for the promotion and maintenance of a particular religion। 28 है, no religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state funds। ओके। तो ये जो 29। फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ना, ये जी जी 28 तक जाता है। जी जी, बिल्कुल 28 तक ही है, उतना ही सीमित है। उसके बाद 29 इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ऐसा करके है। ये माइनॉरिटीज का है ना, माइनॉरिटीज का है, द राइट टू कंजर्व द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर एंड एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो आप बोल रहे हैं वो 29 में है। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ कि 29 जी 30 सर। को अगर हम इस तरीके से डिवाइड करें कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में, तब तो ठीक हो जाएगा ना वो। 30 तो हाँ वो, माइनॉरिटी की बात कर रहा है। हाँ हाँ, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ही है, एकदम सही बोले आप। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ही है वो, क्योंकि हर एक 29 जगह का कल्चर के बारे में बोला है और उनका राइट्स
फिर उनका 29 क्या बोल रहे हो? एजुकेशनल राइट्स। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज की बात कर रहा है 29 में। तो इसमें दो और पार्ट 30 में राइट डिवाइड ऑफ करते हैं ना। माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है, ठीक है। हाँ हाँ। तो ये अलग से हो जाएगा ना। नहीं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया 25 से 28, और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हो गया 29 और 30। हाँ, फिर ऐसे इसके हो गया जो आप बोल रहे हैं। तो उसके बाद में फिर वो कहा गया अपना, फिर कहाँ है वो? कौन सा वाला सर बताएं? 31, 31 वही है। 31 तो मेरे नोट्स में नहीं है सर। मैं 31 निकाल दिया जो क्या इन लोगों ने? मेरे नोट्स में भी नहीं है। काम क्या आता नहीं है। 31 निकाल दिया ना उसको? कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी निकाल दिया ना उसको? हाँ वो ठीक है। हाँ हाँ हाँ, वो तो हाँ, करेक्ट। उसके बाद में 31 ए में बोल 32। रहा है, नॉट विद एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 13, नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ द स्टेट ऑफ एनी स्टेट एनी राइट द ऑफ मॉडिफिकेशन। अच्छा, ये उसकी बात कर रहा है, एक्विजिशन की बात कर रहा है। वो जो लेते हैं ना लैंड। हाँ हाँ हाँ, एक्विजिशन तो है राइट स्टेट का। हाँ, एक्विजिशन इज अ राइट ऑफ द स्टेट। 31 तो लेना पड़ेगा फिर। तो ठीक है सर, पहले तो वो दो करते हैं, फिर आगे देख लेंगे कोई बढ़िया कुछ मतलब और निकालते हैं 30 उसका। फिर अपना जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात करते हैं, 32 हो जाएगा। 35 तक चला जाएगा वो तो। 35 तक जाएगा 35 ना। तक, हाँ 35 तक जाएगा पूरा। 35 तक खत्म हो गया ना फिर। हाँ, हाँ हाँ बस हाँ, इतना फंडामेंटल ही राइट। इम्पोर्टेंट है। 35 तक जाने के बाद फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे आ सकते हैं हम लोग। एक आ सकते हैं रेट्स पे, कितने तरह के रेट्स हैं टू एनफोर्स दीज फंडामेंटल राइट्स, एक उस पे जा सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में वो ये अपना पार्ट 4, आर्टिकल्स 36 to 51। उसमें कोई थर्टी इंपॉर्टेंट? सिक्स टू फिफ्टी वन नहीं सर, बीच में एक रेट्स का भी बोलेंगे ना, हेबियस कॉर्पस मैंडेमस, वो तो प्रोहिबिशन, 226 पे, वो सर्च्योररी। तो अपन अलग से कवर करेंगे। मैं अभी ठीक सीक्वेंस है वाइज ठीक बता। है। अच्छा, नहीं तब ठीक है, तो इसमें आएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में 36 से 51 तक। कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा पढ़ाना पूरा पूरा कि हमारे को कि गवर्नर कैसे बनता है, राष्ट्रपति कैसे चुनाव होता है, वो सब थोड़ा ना पढ़ाना। हाँ, नहीं वो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन वो तो करेंगे ना। ये आपका 36 से डीपी 51 डी, तक नहीं करेंगे? वो डीपीएसपी में क्या है, वही तो कौन कौन वही से तो ऐसे। मैं बोल रहा हूँ, 36 से 51 है। नहीं नहीं, क्या क्या है उसमें वो देखो ना। अच्छा, क्या क्या है वो हाँ, फिर निकालना पड़ेगा तब। डीपीएसपी, एक मिनट, डीपीएसपी। सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, moral and political sanctions, welfare of the community, ये सब। नहीं, ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं क्या? मैं ये बोल रहा हूँ, वही होंगी शायद। फंडामेंटल ड्यूटीज तो नहीं है ये? नहीं, ड्यूटीज तो राइट तो नहीं हो है। गए। फंडामेंटल ड्यूटीज तो अलग हो गया। फंडामेंटल ड्यूटीज आपका आएगा 51A में। 51A में आएगा फंडामेंटल ड्यूटीज। डायरेक्टिव डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अलग। प्रिंसिपल आर द गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। उनके लिए है भाई ये, हाँ तो गवर्नमेंट के उसमें, लिए है ना ये। नहीं गवर्नमेंट के लिए तो ठीक है, लेकिन उसमें एक आएगा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जिसमें आपका गोलकनाथ केस आएगा, मिनर्वा मिल्स आएगा, ये फिर से ओके आएगा वो। ओके 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 ओके। केशव नंदा भारती आएगा आपका, ये सब आएगा जो हम लोग पहले किए ना। वी हैव टू डिस्टिंग्विश कि वेयर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स, व्हाट विल बी द आउटकम, दैट हैज बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट्स इन दीज इंपॉर्टेंट केसेस। गोलकनाथ का आएगा, केशव नंदा भारती आएगा, मिनर्वा मिल्स आएगा। बट ओवर अ पीरियड मेरे ख्याल में जब से देश में
कॉन्स्टिट्यूशन आया तब से तो इसको ही टिंकर किया गया, हमेशा इसमें अमेंडमेंट लेके आते रहे ना ये लोग। ये तो आते रहेंगे, ठीक है, द कोर्ट्स आर आल्सो देयर टू नहीं, इंटरप्रेट ना। अपनी अपनी सुविधा, मैं बोल रहा हूँ अपनी सुविधा के लिए गवर्नमेंट कभी भी हाँ इन्हें तो जो अमेंडमेंट करेगी, करती है वो इस पे ही बिल्कुल करती बिल्कुल है। बिल्कुल, हाँ करेगी, इसी में करेगी ना, क्योंकि बाकी के साथ तो टिंकर कर नहीं पाएंगे, ये तो हाँ गवर्नमेंट के हाथ में है ये चीज। हाँ हाँ हाँ। आप सही बोल रहे हो एकदम, तभी तो ये सब आया है ना, ये जितने केसेस सुप्रीम कोर्ट के आए हैं वेयर देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट। हम्म। आप एकदम सही बोल रहे हो, फंडामेंटल ड्यूटीज 51A में आएगा। ओके। 51A फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट एंड जनरल। अरे 42nd अमेंडमेंट में से गुजरा था इसको, हम्म। पहले नहीं था। नहीं, इसमें 86 अमेंडमेंट एक और है उसमें 2002 में, 86 अमेंडमेंट 2002 वो भी है। अच्छा, तो ये कौन सा इमरजेंसी आया टाइम, सर? इमरजेंसी टाइम इंदिरा जी ने वो सही काम किया था लगता है। हाँ तो एक ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, 86 अमेंडमेंट, ये हाँ। आया है फंडामेंटल ड्यूटीज के में, 51A के में आया, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू children and wards between the age of 6 and 14 years. This was added by the 86th amendment. अब लोगों हम्म। को लगेगा कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट तो है ही। यस यस। बाकी बाकी सब साइंटिफिक टेम्पर, सेफ गार्ड ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, promote harmony, preserve the heritage and culture, sovereignty, unity, integrity, सब आएगा, respect the ideals and institutions। नेशनल एंथम को बोल रहा है कि रिस्पेक्ट करो, कहाँ कोई कर रहा है? द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, ये सब है हम्म। उसमें 51A में। तो सर बंद वही करें। करते हैं। हाँ सर, अभी के लिए यही तय हो गया कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल्स हम्म। 25 to 28 एक पार्ट आएगा, और दूसरा आएगा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, हम्म। 29 और 30, इतना ही बस, आगे के लिए इतना ही, यस। उतना में बहुत हो जाएगा, फिर मंडे। आगे फिर जी जी जी। मंडे, मंडे और वेंसडे 2 दिन हो जाएंगे ना फिर नहीं, आप देख लीजिए ना, फिर आप भी अपने हिसाब से देखिए ना। नहीं नहीं, अपन वही रखेंगे, मंडे रखेंगे उसको। ठीक है ठीक है। चलो, बंद करूं। जी सर। आज हम इसको बंद करते हैं, नेक्स्ट हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर होगा, 25 से 28 कवर करेंगे। तो अगर आपको ये हमारा स्ट्रीम अच्छा लगा है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले स्ट्रीम में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जी, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद सर।